हे एवरीवन, वेलकम टू फिलोसॉफिकल स्टडी। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे होंगे और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे उस मॉक टेस्ट का जो कि गुरुवार को आयोजन किया गया था। तो डिस्कस शुरू करने से पहले अगर आप न्यू हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चलते रहे। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये सोच रहे होंगे कि मॉक टेस्ट कैसे दें, तो एट फर्स्ट यू हैव टू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल फिलोसॉफिकल स्टडी। यहाँ पर आपको हर गुरुवार को शाम 5 बजे ठीक है मॉक टेस्ट का लिंक मिलेगा। तो फ्रेंड्स, तो आपको उस लिंक को क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, तो आप ज़रूर एक बार रीड कर लीजिए। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक मॉक टेस्ट नहीं लिया है वो यह मॉक टेस्ट ले सकते हैं। तो पहले आप वीडियो को पॉज करें और पहले खुद आंसर देने की कोशिश करें, फिर हमसे मिलें। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, लॉजिक ऑफ एरिस्टोटल डील्स विथ, यानी कि एरिस्टोटल का जो लॉजिक है वो किससे डील करता है। ऑप्शंस आपको खुद रीड करना होगा। ठीक है, आपके पास 10 सेकंड का टाइम होगा। एंड द आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन्फरेंस, फैलासीज, डिवीजन, डेफिनेशन एंड इंडक्शन। ओके, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉज, यानी कि एरिस्टोटल के अनुसार कौन सा कारण नहीं है। ठीक है, एंड द आंसर इज डी, इनफॉर्मल। अगर ये फॉर्मल होता तो ये कॉज होता। ठीक है ना फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थियोरी ऑफ फॉर्म्स इज एसोसिएटेड विथ, and the answer is A, Plato's metaphysics. Okay, the theory of forms or theory of ideas is a philosophical theory, concept or worldview attributed to Plato. Okay, that the physical world is not as real or true as timeless, absolute, unchangeable ideas. Okay, and next question is, according to Plato, ideas are, and the answer is C, ideas are material. ठीक है, according to Plato, ideas are material. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल गॉड इज द, यानी कि एरिस्टोटल के अनुसार ईश्वर क्या है। एंड द आंसर इज डी, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल गॉड इज द इंस्ट्रूमेंटल कॉज ऑफ द यूनिवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कॉन्सेप्ट ऑफ अनमूव्ड मूवर फॉर गॉड वाज डेवलप्ड बाय, एंड द आंसर इज डी, नन ऑफ देम। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट ऑफ अनमूव्ड मूवर फॉर गॉड वाज डेवलप्ड बाय एरिस्टोटल। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन में एरिस्टोटल नहीं है, तो नन ऑफ देम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु रेज्ड ऑब्जेक्शंस अगेंस्ट द फेलासी ऑफ द थर्ड मैन। एंड द आंसर इज बी, प्लेटो। ठीक है, द थर्ड मैन आर्ग्यूमेंट फर्स्ट appears इन प्लेटोज डायलॉग पार्मेनिडिस। Next question is, the third man argument aims to show that Plato's theme of ideas involves,
एंड द आंसर इज डी, इन्फाइनाइट रिग्रेस। तो फ्रेंड्स इन्फाइनाइट रिग्रेस क्या है? तो एन इन्फाइनाइट रिग्रेस इज अ सीरीज ऑफ appropriately related elements with a first member but no last member, okay, where each element leads to or generates the next in some sense, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निकोमेकियन एथिक्स was written by and the answer is C, Aristotle, okay, the Nicomachean Ethics was written by Aristotle. Next question is which of the following is not the writing of Plato? एंड द आंसर इज डी, मेडिटेशन ऑन फर्स्ट फिलोसफी। ये जो ग्रंथ है ये डेकार्ट्स की तरह लिखा गया था, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू निकोमेकियन एथिक्स फ्रोनेसिस रेफर्स टू तो फ्रेंड्स आंसर इज ए, प्रैक्टिकल विजडम, यानी कि व्यवहारिक ज्ञान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच इज एरिस्टोटल्स करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ गॉड? एंड द आंसर इज सी, प्योर फॉर्म एंड प्योर एक्चुअलिटी, okay, and according to Aristotle God is pure form, pure actuality, absolutely perfect and intelligent and the first and final cause of the world, okay. Next question is Plato criticizes this doctrine man is the measure of all things, okay, most thoroughly in and the answer is B, Theaetetus. Okay, friends. And the most popular statement, a man is the measure of all things, is given by Protagoras. ठीक है. And the next question is Meno is associated with and the answer is D, nature of knowledge and instruction. Okay. ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। तो which of the following were rejected by Plato with regard to the answer what is knowledge? Friends, when Plato gives the answer what is knowledge, then he rejected knowledge is sense perception, knowledge is opinion and knowledge is judgment. Okay, यानी कि आंसर ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, ठीक है फ्रेंड्स, अब बारी है रिज़ल्ट पब्लिश करने का। चलो देखते हैं कौन इस बार फर्स्ट आया है और कौन सेकंड और कौन थर्ड। सो आर यू एक्साइटेड गाइज? First is Sujata Maiti and her score is 24 out of 30. Seconds are Devarati, Sontu Ghosh and MD Hassan Ruli and their scores are 20 out of 30. And thirds are Susmita Maiti and Sormista and their scores are 18 out of 30. सो गाइज बी प्रिपेयर्ड फॉर अपकमिंग मॉक टेस्ट, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और चित्त को शांत रखकर अपने प्रिपरेशन को आगे लेकर चले। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादातर अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू।